सोचो यार, मैथ्स आपको ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। Hi, my name is Ira, and right now the conversation everywhere is about NEP 2020. Let's quickly have a look at certain points that we know from the NEP. I must mention that right now it's really vague, but here's what we know for sure. So before we get into this, I think it's important to know that ये NEP 2020 एक educational reform है that's come almost after 34 years. BJP के manifesto में भी था ये in 2014, and इस पे जो consultation process है that had started sometime in 2015. फिर एक कमेटी रिपोर्ट आई थी 2017 में एंड इसका एक ड्राफ्ट सबमिट किया गया इन द ईयर 2019. सो काफ़ी सालों से NEP 2020 पे काम चल रहा है एंड हियर आर सर्टेन पॉइंट्स. सो आई थिंक हम सब जानते हैं कि पढ़ाई हम देखते हैं विद 10+2+3 के लेंस में, लेकिन अभी इसका डिवाइड थोड़ा सा चेंज कर दिया है और 5+3+3+4. अभी ये एग्जैक्टली डिवाइड क्या है, लेट्स नॉट स्ट्रेस टू मच ऑन दैट. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द 5 वाला ब्रैकेट. जब बच्चे 3 साल के होंगे, जब पेरेंट्स उन्हें नर्सरी में डालते हैं, यू रिमेंबर योर नर्सरी राइट, मतलब जो मर्जी में आता था आपको सिखाया जाता था वहाँ पे. लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है दैट वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ द किड्स आर सपोज टू बी टॉट. एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जब बच्चे अपने इनिशियल ग्रोथ ईयर्स में होते हैं तो उस हिसाब से उनकी पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाया जाएगा उन्हें, ताकि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स बेटर एज दे गो. द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज समथिंग दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, लैंग्वेज. तो ये सजेस्ट किया गया है दैट बच्चों को पढ़ाया जाए अप अंटिल 5th और मे बी इवन 8th इन देयर मदर टंग और इन देयर लोकल लैंग्वेज और इन देयर नेटिव लैंग्वेज. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दिस व्हिच आई थिंक इज अ लिटिल प्रीमेच्योर बिकॉज अभी तक हमारे पास सारी डिटेल्स नहीं है. बट आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद सर्टेन एक्सपर्ट्स एंड दे हैव टू से दैट अगर आप किसी भी बच्चे को, स्पेशली एक छोटे बच्चे को, उनके मदर टंग में कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हो तो वो उसे ज़्यादा बेटर समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, अगर आप एक 8 साल के बच्चों को समझा रहे हो तो दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर इन देयर ओन मदर टंग एज अपोज टू इंग्लिश. लेट्स इवन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूशन्स राइट. आप ट्यूशन्स में जब जाते हो तब वाई इज इट ईजियर फॉर यू टू ग्रास्प सर्टन टॉपिक्स, बिकॉज आपकी टीचर जो है वहाँ पे वो आपको वही टॉपिक जो आपने स्कूल में सीखा था अंग्रेजी में, दैट शी इज टीचिंग इट टू यू इन से हिंदी और मराठी or whatever your local language is, and that's why you grasp it quicker. So I think that is something for us to ponder on and not really panic over, at least right now, because by December we're going to see a more clearer picture, because that's when more details on this policy is going to roll out. The next point is that इस समय पढ़ाई में 6th स्टैंडर्ड से फॉर एग्जाम्पल आगे टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ई-लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. किड्स विल बी टॉट हाउ टू कोड एंड सिर्फ लिमिटेड उनकी एजुकेशन टेक्स्ट बुक तक नहीं होगी. दे विल ऑल्सो बी टॉट अदर वोकेशनल कोर्सेज. उन्हें स्पोर्ट्स में भी इंकरेज किया जाएगा, आर्ट्स, म्यूज़िक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल ऑल्सो बी एनकरेज्ड. कहीं ना कहीं बेसिकली एक जो परसेप्शन है दैट ये सारे सब्जेक्ट्स से बेटर है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी. नाउ हाउ दैट विल हैपन वी डोंट रियली नो, बट वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड वाज दैट यू नो हाउ वी यूज्ड टू हैव टू लाइक लिटरली गॉबल अप द टेक्स्ट बुक राइट, फ्रंट बैक हम सब रट्टा मार के जाते थे. दिस विल नॉट बी द केस. एग्जाम्स में बच्चों के की कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाएंगे एंड उनकी रिपोर्ट कार्ड भी जब आएगी तो इट्स गोइंग टू नॉट ओनली हाईलाइट देयर मार्क्स बट ऑल्सो हाउ दे बीन परफॉर्मिंग इन अदर स्किल्स एंड अ कपल ऑफ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल. एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई इज दैट देयर इज गोइंग टू बी प्रोफिशिएंसी लेवल्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. सबसे पहले मैथमेटिक्स के साथ शुरू किया जाएगा. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद या फिर दे आर नॉट गुड एट मैथ्स. सो मैथ्स को ऐसे 2 लेवल्स में डिवाइड किया जाएगा. वन विल बी बेसिक, वन विल बी एडवांस्ड. एंड जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो ये इसमें एडवांस्ड में मेजर करें, दे विल बी अलाउड to pick that subject, whereas you can go ahead and maybe decide to pick an AP in English. Of course ये कैसे execute किया जाएगा that we will only know eventually once all the details are out, but I found this to be very very important. So I'm sure that you've also had this conversation with your parents कि 10th standard के बाद आपको कौन से stream में जाना है. I mean I've heard this my entire life, बेटा तुम science ले लो, उसके बाद तुमको जो करना है तुम वो करना. But now under this NEP 2020 ये जो hard markers है ना science, arts और commerce के बीच में, उसे हटा दिया गया है. So that means that a student is free to say opt for physics and उसके साथ में ही they can also decide to study something like a political science or maybe even psychology, and I think that's amazing. सोचो ना यार, तुम अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. Now let's talk about my favorite bit that has come up in NEP, boards. बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस कम की जाने वाली है. इफ़ यू हेard anywhere कि बोर्ड्स हटा दिया है, तो नहीं, ऐसे नहीं है. बोर्ड के एग्जाम फिर भी होंगे,
बट यू नो हाउ देयर इज दिस एंटायर स्टिग्मा, और रादर यू नो बोर्ड्स को ना मतलब ऐसे एक पेडेस्टल पे बिठा के रखा है दैट ओ दीज मार्क्स तो मतलब दे विल डिफाइन योर लाइफ एंड दे विल डिफाइन योर करियर एंड दे विल डिफाइन योर फ्यूचर, विच आई थिंक इज़ अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन. बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट बोर्ड्स पे जो इंपॉर्टेंस दिया जाता था उसे कम किया जा रहा है. हाउ इज़ दैट हैपनिंग? दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज बोर्ड्स के मार्क्स पे अब आपके आगे के एडमिशन्स बेस्ड नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो बोर्ड्स में मार्क्स मिलेंगे दे विल रियली नॉट मैटर. वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, दूसरे कोर्सेज के लिए भी एक सेंट्रल एग्जाम कंडक्ट की जाएगी. दिस आई यू नो व्हाई आई रियली लाइक सो मच इज़ बिकॉज इट वोंट मैटर कि आप कौन से बोर्ड से आ रहे हो. आप SSC बोर्ड से आ रहे हो, आप CBSE बोर्ड से आ रहे हो, आप इस बोर्ड से आ रहे हो. यू ऑलवेज नोटिस दैट देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल ऑफ दीज बोर्ड्स. बट व्हेन देयर इज़ अ सेंट्रल एग्जाम दैट्स हैपनिंग दैट्स गोइंग टू गिव यू यू नो योर एडमिशन इन वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट द प्लेइंग फील्ड जो है वो एक लेवल हो जाती है बिकॉज यू आर ऑल गोइंग टू बी गिविंग द सेम एग्जाम एंड उसके मार्क्स विल यू नो समवेयर गेट यू इनटू द यूनिवर्सिटी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज़. यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज जो हैं वो कहीं 3 से 4 साल की जाएंगी और योर ग्रेजुएशन कोर्सेज. बट माई फेवरेट थिंग इज़ दैट दे हैव मेड द कोर्स अ बिट सिक्योर इन द सेंस दैट टुमारो फॉर वट एवर रीजन्स यू नीड टू ड्रॉप आउट और यू वांट टू ड्रॉप आउट, आपको क्रेडिट सिस्टम दिया जाएगा. आपके जो भी क्रेडिट्स हैं वो आप अपने बैंक में एक्यूमुलेट कर सकते हो बेसिकली, एंड टुमारो इफ यू फील लाइक ड्रॉपिंग आउट यू कैन एंड यू कैन कम बैक एंड कंटिन्यू विद दोज क्रेडिट्स. इसकी वजह से आपका कहीं ईयर लॉस नहीं होगा. एंड in case you need to transfer universities, now if you've ever tried to transfer a university, you know how difficult it is. I mean, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी के अंडर के कॉलेजेस में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है. But if you want to go to a different university, you may even have to start the course from scratch. Now, this system that's coming into play will allow you to take your credits from one university to another. I think that is an extremely brilliant move, and like I said, makes your education, your university education extremely secure. Another thing that's been allowed is that foreign universities can now open their institutes here in India. So there's a lot of kids, who aspire to go abroad, but monetary reasons की वजह से it's really not possible. However, if you get the same kind of education from the same university at a discounted rate, I think this is going to help a lot of people out because at the end of the day आप अपनी मनपसंद की कॉलेज से इंडिया में से पढ़ाई कर सकोगे. So these were some key highlights of NEP 2020. Now this is going to take a while to implement. Not a while से मेरा मतलब है 10 साल ऑलमोस्ट. भले इस पे काम जल्दी ही शुरू हो जाए, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके बारे में that a lot of people have raised concerns about, and I think they're very fair. Let's hope that they will all get looked into. Let's hope that जो भी हमारी सारी ये promises हमें की गई हैं they will be implemented properly, because very honestly when I read all of this I wish that काश मैं अभी स्कूल वापस जा पाती, काश मैं ऐसे अभी पढ़ पाती. सो दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडे. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इफ़ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक कर दो यार, मतलब इतनी मेहनत की है. डू कॉमेंट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, चिली फ्लेक्स, एंड बी श्योर टू कम बैक फॉर मोर. बाय.